वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, थर्मल रेजिस्टेंसेस एंड सर्किट्स। सो लेट अस प्रोसीड। सी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो आज हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को थर्मल सर्किट से। सो देखो, यहां पर एक साइड में आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरे साइड में दिखाई देगा थर्मल सर्किट। ओके, so in electrical circuit the parameter which is responsible for movement of electrons is what? Potential difference. In the same way in thermal circuits the parameter which is responsible for heat to flow is temperature difference. And my dear friends, heat will always flow from body at higher temperature to body at lower temperature. So यहाँ पर आपको दिखाई देगा voltage is equivalent to temperature difference. Okay. इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। थर्मल सर्किट में क्या फ्लो होगा? हीट फ्लो होगा। सो करंट इज सेम एज heat in thermal circuit. And the last, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इन द सेम वे थर्मल सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस आएगा उसे बोलेंगे हम थर्मल रेजिस्टेंस। सो ये यहां पर हाईलाइट किया। नाउ गवर्निंग लॉ क्या है बताओ? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वी हैव ओम्स लॉ. So what Ohm's law will tell us? Ohm's law tells us that current flowing will be directly proportional to voltage and inversely proportional to electrical resistance. In the same way heat flowing through thermal circuit will be directly proportional to temperature difference but inversely proportional to thermal resistance. It means higher the thermal resistance, lesser will be the heat flow. Okay, is that clear? So current is same as heat, potential difference, that is voltage, is same as temperature difference. And in electrical circuit we call electrical resistance, and in thermal circuit we call थर्मल रेजिस्टेंस. सो जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी सीरीज और पैरेलल ये पॉसिबल कनेक्शंस थे, वैसे ही थर्मल सर्किट में भी पॉसिबिलिटी, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी. देखो, फर्स्ट जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया दैट इज सीरीज सर्किट. नाउ यहां पर मैंने दो रेजिस्टेंसेस अज्यूम किए, R1 and R2, and you know that resistances gets added in series. रेजिस्टेंस एड अप होता है, टोटल रेजिस्टेंस एड अप होता है. तो चलो मान के चलते हैं मुझे एक सिस्टम डेवलप करना है जिसका रेजिस्टेंस ये सिस्टम के बराबर हो, दो रेजिस्टेंसेस के बराबर हो. ओके, सो व्हाट आई विल डू, I will replace that system by only one resistance, and that resistance value will be calculated as my dear friends, see, you observe this end here and this end here. Okay, you need to assume one condition like T1 is greater than T3 or T3 is greater than T1 so as to decide direction of heat flow.
So for a moment, I will assume T1 is greater than T3. So what will be direction of heat flow? Heat will always flow from body at higher temperature to body at lower temperature. So that's why this will be the direction of heat flow. Okay. Now we can apply this particular formula between any 2 points. Why? Because same heat is flowing through the circuit. Now you observe this. I have considered R1 only, so that's why these potentials. Okay, for R2, T2 and T3, see, this is T2 and this is T3. Okay, same heat will flow, as this is series arrangement. Okay, now if you are interested in total, so you consider total resistance. Okay, now let us think of what will be the case if we have resistances in parallel. So my dear friends, if we have parallel circuit, then you add up reciprocals of resistances and equate that to the reciprocal of total resistance. You add reciprocal of respective resistances individually, and you that equate to reciprocal of total resistance. Okay, it's very simple. See, okay, see, how will you get to know that a particular circuit is in parallel? You just think of potential. See, potential. Okay, left side is at potential of T1 and right side is at potential of T2. Fine, and this can be replaced by total resistance, which will be given by this expression. I hope this thing is clear to you. Okay, now the most important thing, भैया कुछ भी पढ़ लो आप, assumption क्या है वो पता करना बहुत ही जरूरी है. कोई theory बताता है, कोई derivation कर रहे हो आप, assumptions are very much important. So that's why I will focus on assumptions. See, assumption for electrical analogy approach. First thing, heat generation must be equals to 0. Heat generation नहीं होना चाहिए. Second thing, steady state heat transfer. What it means? Steady state. Temperature is not a function of time. Steady state means temperature is not a function of time. That's why dabba capital T by dabba small t. Small t here denotes time equals to 0. And one dimensional heat flow. You can apply the simplest approach in one dimensional heat flow. Okay. Now, in a nutshell, there are three types of thermal resistances. See, thermal resistance के सर कितने टाइप से देखो, R conduction. Okay, under R conduction we have plane wall, hollow cylinder and hollow sphere. Okay, after that R convection. फ्लूइड की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा, फ्लूइड फ्लो की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा उसे कहेंगे हम R convection. And R radiation. For a moment, I will not discuss this particular R radiation. Why? Because we are going to study that particular in detail in a separate unit. Okay, but for a moment, this R resistance, this R radiation will include
will include surface properties, then emissivities, all those things. Okay, but as of now we have to take care of these two things, and you can get the value of resistance using Stefan Boltzmann law, but that is not required for radiation I'm talking about. Now let us proceed. Let us proceed with R conduction, and that too plane wall. See, now we are going to derive single expression, and at the last we are going to summarize, we are going to revise, we are going to recall what we have derived. So let us proceed. R conduction for plane wall. So my dear friends, see, we have a wall, left face is at temperature T1 and the right face is at temperature T2. Okay, and I have assumed axis here. So from observation you can get, आपको पता चलेगा अगर आपने ऑब्जर्व किया अच्छे से कि लेफ्ट face is at x equals to 0 and right face is at x equals to capital L. Fine. So I have assumed T1 is at higher potential than T2. T1 टेम्परेचर बड़ा है इन कंपैरिजन टू T2, सो हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, हायर टेम्परेचर टू lower temperature, heat will always flow in the direction of decreasing temperature, negative temperature gradient. So let us apply Fourier's law, the simplest law for conduction. Fourier's law में हमें कौन सी चीजें लगती है? देखो क्या क्या लगेगा Fourier's law में. सर हमें लगेगा K, which is thermal conductivity, then A is area normal to heat flow, and then this temperature gradient. Fine. Now we are going to derive, so that's why let us shift this dx term to the left hand side. So we'll get q dx equals to minus ka dt. Now we are going to integrate, but sir, you tell us which parameters need integration. Dt means temperature needs integration, and dx means the distance along x axis needs to be integrated. So अब देखो लिमिट कैसे, सर यहाँ पर देखो x के लिमिट है 0 to L, टेम्परेचर के लिमिट है T1 to T2, एंड यू नो दैट dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा. सी, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आएगा. देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन अप्रोच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपको, L माइनस 0, T2 माइनस T1. देन ये माइनस साइन मैंने अंदर शिफ्ट कर लिया है. फाइन. सो I'll get T1 माइनस T2, एंड एट द लास्ट सी L को यहां पर शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में. बट ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? ये सब करना क्यों है मुझे? Because I want equation in a particular form, Q equals to del T by R. del T अगर ऊपर del T रहेगा तो नीचे जितना टर्म आएगा वो रेजिस्टेंस बताएगा मुझे. So see, I will try to arrange equation in this particular form where I'll get del T at numerator, and the thing which will be in the denominator side will be thermal conductive resistance for plane wall. So we have derived equation for conductive resistance for plane wall, which is L divided by Ka. So कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड है? देखो, लेंथ ऑफ वॉल, ओके, thermal conductivity of wall, and normal area to the heat flow. So we are done with plane wall. Let us proceed with next case, and that case is R conduction for hollow cylinder. Okay, now my dear friends, there are two possibilities of heat transfer. First is
first is in axial direction. First is in axial direction. The second is in radial direction. See, are you getting my point? So let us think of first axial direction. See, if you have cylinder a pipe, then this face and this face will be at different potential. So this is not a different case, my dear friend. This is not a different case. This is the case of plane wall having face as hollow circle. See, so area will be what? Area will be what? Pi RO square minus RI square. Nothing is different. You will get the solution when you will substitute area equals to pi RO square minus RI square. So we are done. So this will be for axial heat flow. Okay. But as you see, we have L. We have L, that is length of pipe in the numerator, and compared to radius, length is a much bigger dimension for pipe. So that's why resistance will be high. If resistance will be high, then heat transfer will be less. Okay, so this is axial heat flow, and we are done with axial heat flow. Now let us think of radial heat flow. Okay, radial heat flow means you have circle, okay, cylindrical pipe, you are inside, and then heat is flowing in the radial direction. So let us think of this now. L is what? Length of that particular pipe, and we are interested to derive this particular equation for hollow cylinder. Okay, so here I have shown diagram. Okay, see, this outer radius RO is at temperature of T0, and let me indicate inner radius. This inner radius, this is what? Any radius R, any random radius R, and this is inner radius Ti, which is at temperature of Ti. So now, why there is need to consider any radius at any layer at radius R? Because I know that area is varying in radial direction. Because as this is radial heat flow, I have to consider circumferential area. See, radial heat flow. See, this area, this, okay, this will be what? 2 pi r into L. 2 pi r into L. I have to consider that area, and that area is a function of what? Radius. If radius will vary, area will vary. That's why we need integration. So see, I have written here area, which is 2 pi RL. So now the same approach we are going to apply Fourier's law. There we are going to substitute area equals to 2 pi RL. So okay sir, we have substituted area equals to 2 pi RL. Now let us integrate inner radius to outer radius, and temperature at inner radius is Ti, temperature at outer radius is To. So ln R, which is integration of 1 upon R. Then you will substitute upper limit minus lower limit. See, upper limit minus lower limit, ln RO minus Ri, which will be equals to log m minus log m. क्या होता है? Log m by n. So ln RO by Ri. द राइट साइड में आपको क्या करना है? वही सब्सटीट्यूट करते आना है. dt का क्या आएगा? t आएगा. देन सब्सटीट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देन माइनस साइन अंदर शिफ्ट किया. ब्रैकेट देखो, ऊपर वाला ब्रैकेट देखो, ये देखो,
ठीक है, साइन चेंज होगा. अगेन हेयर टू आई विल डू वन थिंग. सी, मेरा टारगेट क्या था, देखो मेरा टारगेट था मुझे सेट करना है Q इक्वल टू डेल टी अपॉन आर, एंड वी हैव रिटन एक्सप्रेशन फॉर हॉलो सिलेंडर. सो दैट्स वाई आप डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ न्यूमरेटर पे रख दो, बाकी सारी चीजें डिनोमिनेटर में लाओ, ठीक है, यूजिंग मैथमेटिक्स के रूल. सो you'll get R conduction for hollow cylinder as ln RO by Ri divided by 2 pi KL. okay, so this particular resistance will be in radial direction. अगर आपको बताया नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको सिलेंडर के लिए रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर कंसीडर कर दो, अगर मेंशन नहीं किया है. ओके, व्हाई? बिकॉज इन एक्सियल डायरेक्शन देयर विल बी टू हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज एल इज हाई, एंड पाइप से फ्लो होता है, हीट अगर ट्रांसफर होता है, फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, तो हीट पॉसिबिलिटी क्या है, हीट लूज करने की, इन द रेडियल डायरेक्शन ओनली. नो, इफ दिस इज अ पाइप, हीट फ्लो विल बी इन रेडियल डायरेक्शन ओनली. ओके, रेफ्रिजरेशन डक्ट कंसिडर कर सकते हैं आप. ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. नाउ वी हैव लास्ट केस फॉर कंडक्शन, एंड दैट इज हॉलो स्फीयर. सो सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना होगा ये स्फीयर कैसे दिखेगा. ओके, सो लेट अस विजुअलाइज. फाइन. सो हीट ट्रांसफर जो होगा यहां पर भी रेडियल डायरेक्शन में होगा. सी, इफ दिस इज सेंटर, it means if you consider sphere and if you are sitting at the center, you look around everywhere. So I think we have to consider area from where heat is going out or in, and that area is total surface area of sphere, which is equals to 4 pi r square. So now see, total surface area of sphere at any radius r. I have assumed any random radius because यहाँ पर भी अगर रेडियस चेंज हो गया, सी, अगर यहाँ पर रेडियस अगर चेंज होता है तो एरिया चेंज होता है ना, एरिया चेंज हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. सो एट इनर रेडियस I have surface area as 4 pi r I square, and at outer radius I have 4 pi r o square. Now apply Fourier's law, substitute area equals to 4 pi r square, and that is at any radius r, because we have to apply limits and all. So you'll observe that I have substituted area equals to 4 pi r square. And again I will be doing integration. Let us set dr by r square, then यहाँ पर रहेगा dt term. Let us integrate. I know that डिनोमिनेटर में था ना, तो न्यूमरेटर में लिया तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. सो x एस टू एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, x एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. इन द सेम वे ये आया, फाइन. और यहाँ पर dt का क्या आएगा, dt का t आएगा सर, कैपिटल T. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. सो यहाँ पर देखो 1 अपॉन आर आएगा, अपर लिमिट आर के जगह पर आर ओ रख दो एक बार, माइनस आर के जगह पर आर आई रख दो, और यहाँ पर क्या आएगा, टी ओ माइनस टी आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा. अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम कर दो, फिर यू गो ऑन सेटिंग टू गेट इक्वेशन. विच इक्वेशन? टू गेट this equation. Q equals to del T upon R.
नीचे जो भी टर्म रहेगा डिनोमिनेटर में, नीचे जो भी टर्म रहेगा डिनोमिनेटर में, वो रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ hollow sphere. Okay, so we are done with derivation of R conduction for hollow sphere. Now it's time to recall what we have derived. So let us think of that. First thing, R conduction. We are done with R conduction, and R equals to L by Ka. This formula is valid for plane wall. Then for hollow cylinder, you have formula ln, that is natural log of Rho by Ri upon 2 pi Kl. And for hollow sphere, you have formula Rho minus Ri upon 4 pi K Rho Ri. So yes, we are done with R conduction. Now let us proceed. Let us think of R convection. कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहेगा, चलो देखते हैं. तो ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो चलो आप प्लेट कंसीडर करते. लेट अस कंसीडर a plate which is at temperature TW and fluid which is at temperature of T infinity. So देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है. अगर वॉल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ले लो TW माइनस T इन्फिनिटी. अगर फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस ले लो आप T इन्फिनिटी माइनस TW. नाउ एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इक्वल्स टू HA del T. Q equals to HA del T. Again my target is to set formula for Q equals to del T upon R. Denominator में जो रहेगा वो रहेगा resistance, and here we'll have convective resistance. So चलो सेट करते. फॉर्मूला मैंने सेट कर दिया और मुझे मिल गया 1 by HA. क्या मिला मुझे मिला 1 by HA. So my dear friends, you tell me what will be this 1 upon HA. This 1 upon HA will be convective resistance. So ये convective resistance के फॉर्मूले में H आ रहा है. H is what? Convective heat transfer coefficient, and convective heat transfer coefficient is not a property of material. It will depend upon whether the flow is लैमिनार टर्बुलेंट. उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट है, नेचुरल कन्वेक्शन है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है, ज्योमेट्री कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सो वी विल लुक इनटू दैट in detail in convection unit, but as of now, yes, we are done with convective resistance, and which is equals to 1 upon HA. I hope you have enjoyed this session. So we'll meet again in the next lecture. Keep enjoying, keep learning. Thank you.